ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर का व्लॉग जो मैं बनाता हूँ यहाँ पे मैं जो आपको गाइडेंस देता हूँ, जो टिप्स देता हूँ पास होने की, वो जो बंदे उस लेवल पे हैं अंडरस्टैंड करके पास हो रहे हैं। 51 ग्रेड है, मैं ये नहीं कहता हूँ मेरा ही सुनो, लेकिन आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां, बिल प्लांट हो गए, पास एंड गो हो गए, इनके बंदे आ रहे हैं मेरे पास और बता रहे हैं कि 25-25 हज़ार पाउंड दे चुके लर्नर। आप कहाँ के क्लेवर बनते हैं? आपके पास इतना क्या आ गया कि आप इनके साथ जाके ऐसा सोचते हैं कि नहीं, ये हवाले हो गए, बिल प्लांट हो गया, पास एंड गो हो गए, ये हमें सारा कुछ दे देंगे। हमारे जो मेंटालिटी है, हमारा जो एक क्राइटेरिया है, हमें जो पढ़ाना आता है, हम जो कर सकते हैं, वो जो ये दूसरी ज़बान में हमें पता चलता है, अंग्रेज़ी में पढ़ाते हैं या वो लफ्ज़ देते हैं, ये हमारी ज़बान में ऐसे हमारे दिमाग में इतना आसानी से नहीं बैठता है। अगर 2-4 पॉइंट, 5 पॉइंट अगर आप ख़ुद जहन में रख लें, तो ये जो टीचिंग स्ट्रेटजी है, ये जो रिस्क मैनेजमेंट है, ये जो लेसन प्लानिंग है, आप इसमें कभी नहीं फेल होंगे। मुझे बड़ा दुख होता है जब लोग 28 नंबर लेके, 29 नंबर लेके और फिर उसका वो 2-3 नंबर से रहते हैं जब, और मैं जब देखता हूँ कि यहाँ पे इनको ये कहना चाहिए था, ये करना चाहिए था। अब जब आपको ऐसे लोगों को पता ही नहीं है, आपका टेस्ट है, आप 30 मिनट्स खड़े हो के किसी एक चीज़ पे लेक्चर दे रहे हैं, किसी एक चीज़ के ऊपर आप इतना वो टाइम ज़ाया कर रहे हैं, आप क्लाइंट सेंटर्ड क्या है उसके ऊपर क्यों नहीं जाते हैं? रिस्क मैनेजमेंट और लेसन प्लानिंग, लेसन प्लान अगर आपका सही ऊपर से बने, वो लफ्ज़ आपके मैच करें और नीचे चल के आप कम अज़ कम, लेकिन ये पॉसिबिलिटी ऐसे मुमकिन नहीं है। लेसन प्लान आप जो मर्ज़ी कर लें, जब आप साथ बैठें तो आपको अपनी जान के लाले पड़े हों, गाड़ी के पड़े हों, आपके अंदर वो हौसला ना हो, आपके अंदर वो चीज़ ऐसी मौजूद ना हो जो आपको एज ए टीचर बैठ के करनी चाहिए। पीडीआईज बेशुमार ऐसी ऐसी गलतियां जब मैं रोल प्ले करता हूं, सीधी सी बात है, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं अपना इल्म टिकटॉक के ज़रिए, वीडियो के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, प्राइवेट एकेडमी के ज़रिए फैला रहा हूँ, बता रहा हूँ। जो मेरे पास है वो मेरा अपना एक शौक़ है, मुझे किसी से कोई गर्ज नहीं है। अगर कोई यहाँ से हासिल करेगा तो फाबिया, नहीं करेगा तो उसकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन आप लोग जब इस जॉब में आते हैं, जब आप पढ़ाना चाहते हैं, तो आप यहाँ बैठ के लर्नर से ऐसी ऐसी गलतियां निकालते हैं, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया। ज़ाहिर वो लर्नर होते हैं, वो तो आपको बोलते हैं कि ठीक है जी, आप जो कुछ कह रहे हैं सही कह रहे हैं। अब मेरे जैसा बंदा, जब आपको थोड़ा बहुत उसके आगे इल्म होगा, एग्जामिनर भी ऐसे ही हैं, वो बैठेगा, तो जब आप उसकी मेरी गलतियां ऐसे निकालेंगी तो इसका मतलब है आप लर्नर की भी ऐसे ही निकालते हैं। तो मैं तो नहीं मानूंगा ना। मैं तो आप आगे से एग्जामिनर की तरह, मुझे वो टेक्निक्स पता है, मैं आपको ऐसे से सवाल करूंगा कि आपकी तो हंसियां निकल जाएंगी, वहां पे आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं एम्बैरेसमेंट के अलावा। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपके पास वो टेक्निक्स होनी चाहिए जिससे आप सीख सकें कि हमने असल में हकीकत में कहना क्या है। इतना मुश्किल नहीं है ये, आप लोगों ने इसको मुश्किल बनाया हुआ है। कैसे बनाया हुआ है वो आप लोग खुद ही अपने आप से पूछें। मैं तो जब किसी से कोई सवाल जवाब करता हूं तो वहां से उनको देता हूं कि आपको जब एक चीज़ का आप इतनी गलतियां निकाल रहे हैं, तो आगे से जब मैं कहता हूं इसकी मुझे एक्सप्लेनेशन दो, लर्नर तो नहीं बोलते हैं ना, मैं जब एक्सप्लेनेशन मांगता हूं तो वहां पे ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे तुझे ये करना चाहिए था। मेरा सवाल वहां पे यह है कि यहाँ पे तो मैं कर लूंगा, कल क्या करूंगा, परसों क्या करूंगा, फॉर द लाइफ ऑफ माई ड्राइविंग में क्या करूंगा, मुझे वो बताओ। हकीकत में जो ड्राइविंग आप दिखा रहे हैं, ट्रांसफ़र जो स्किल्स कर रहे हैं, वो क्या है? वो स्किल्स हैं आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ टाइम ऑफ देयर ड्राइविंग। तो ये जब एग्जामिनर देखेंगे और गाड़ी टेस्ट आपका, लर्निंग लर्नर की तो गाड़ियां आप चला के टेस्टों पे जा रहे हैं, तो फिर बोलें मुझे पास होना है, मैं पास करूँगी या करूँगा। और उसके अलावा फिर जब आप कोई गलती एक पिक करते हैं
तो वो गलती उसका उससे कोई लेना देना ही नहीं होता है। आ जाए, मैं आपको सबूतों के साथ इसके साथ पेश करूंगा। और उसके अलावा आप लोगों के अंदर वो नॉलेज, वो आपने ऐसे ही देखा हुआ है कि कमतर बाला नशीन, हम ड्राइविंग कर रहे हैं, हमें क्या जरूरत है पैसे खर्चने की। हाँ, बिल प्लांट और पास एंड गो और ए वालों के साथ जाके ठीक है, हम वहाँ पे कर सकते हैं 2-2 हज़ार पाउंड। वो आहिस्ता आहिस्ता नमक की तरह पानी में फेंक देते हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता लेते रहते हैं उसका जायका। हम ऐसे नहीं करते। हम ना कॉन्ट्रैक्ट, ना साइन, ना कुछ इस तरह का कोई आपको फंसाते नहीं है कि ले जाओ आप 2-2 साल बस रोते रहो। अगर पास होना है, पार्ट 3 को लेना है, टीचिंग स्ट्रेटेजी को लेना है और इसकी रिस्क मैनेजमेंट को लेना है, एंड यू वांट टू लर्न हाउ टू प्लान द लेसन विद द लर्नर, एंड व्हेन यू प्लान द लेसन व्हाइल योर कार इज स्टेशनरी, how will you implement that lesson plan on the move? Lesson, you plan the lesson very nicely because you sitting down there, car is stationary, and the problem starts when the things are moving. Problem starts when the time starts ticking, and then this is problem, you didn't do this, you didn't do this, you didn't do this, you didn't do this. When it comes to explanation, when it comes to coping strategy, when it comes to detail analyzation, when it comes to sympathy analyzation, that okay, when learner makes mistake, you can't just go angry with them. आप ऐसे नहीं उनको बोल सकते हाँ जी तेरे को होंदा होंदा। They came to you to make mistake. It's your job to put them on the right path. It's your job to give them a live, a real example, critical incidents out there to make them understand the things that they're doing so they don't do it next time. And if you have no sense of picking up live example, if you have no sense of picking up live critical incident, if you have no sense of analyzing the actual problem and then going to the root cause of it, no matter what you do on top of tree, if the root is not very solid and the root is got no masala inside and the the right type of medicine with the roots, the mango won't grow on trees then. आप जिस तरह तरीके से ये टेस्ट ले रहे हो ना, मैं लोगों की मेंटालिटी को समझता हूँ, मैं बच्चा नहीं हूँ। आपको जब उस तरह से गाइड किया जाता है तो फिर बेशुमार, मुझे तो परवाह नहीं है, मैं तो लर्निंग करने वाला हूँ, हंसी मजाक से लेने वाला हूँ, हंसी मजाक से देने वाला हूँ। बेशुमार फिर वहाँ पे उनकी आंखें सफ़ेद हो जाती हैं कि यार ये इस तरह के सवाल, हो ये तो बड़े स्ट्रिक्ट हो गए। वो जो एग्जामिनर के फिर फीडबैक आती है जब वहाँ पे कि गाड़ी का एटमॉस्फेयर बहुत नाइस था, आपका बड़ा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर था, लेकिन हेल्प नहीं थी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि बाशे उड़ा रहे हो गाड़ी में बैठ के, वेप कर रहे हो, या फ़ोन पे लगे हुए हो टिकटॉक और वीडियो और टाइम गुजारना चाहते हो। चलो, कोपिंग स्ट्रेटेजी, प्रोएक्टिव, रिएक्टिव क्या है, ये इस तरह की चीज़ें अगर आपने लेनी है तो पार्ट 3 की जो असल जो लेसन प्लान की जो मेन जड़ है वो उसका नंबर 4 है, लेसन अडॉप्शन। और लेसन अडॉप्शन, पीपल वांट टू नो दैट, गिव अस द टेक्निक फॉर लेसन अडॉप्शन। Viewers, I'm telling you, and the people who are watching these videos as an instructor, as a trainer, they will agree to this, that the lesson adoption, there is not a one specific thing that you can have. It depends on the individual, every client, every learner that sits with you, and soon they drive. As a trainer, as a doctor, as a ADI, as a PDI, you have to pick up the adoption from their doing for that time. Same client will make you adopt different things in 1 hour, and the next hour they will make you adopt different things. So lesson adoption in reality is basically all about for the time when they start driving, no matter what they said while they were here.
Even though what they said while they were here, you have to ask them linked question according to their ability. And I've seen somebody give an example of the picking up the first lesson plan, and then the second question they're picking up that was the ability. People had that ability, and that was totally making no sense. I had 2-3 instructors with me at that time when we would watch that video, and they all said, what is he talking about? He even don't know what is he talking about. And he was an order trainer. And they all said, it's not that I am a trainer and I'm saying this. They all said, and I said, listen to this, that this ability, the lesson plan, that the first question, that did you help the pick up the goal with the learner? And that goal, was it according to people's ability? And they were talking about junctions, and they're talking about the left and right, and suppose they did this and suppose they did that. That's not the ability. The ability is they want to know that you've seen this patient before. What you've seen as a physically, mentally, and the doing wise, things that they're doing in their driving and they've done in the past, what they said to you now, do you agree as a trainer, as a PDI, as a doctor of the driving, that is that ability, does that comes closer to them? This is what the ability is. You can't just start giving example left and right for the ability. Even though I have people that they've done nicely left and right. They've done approaching junction perfectly fine. But next time when they picked up something else as a goal, their ability for those junction is gone. They will start doing something else on the junctions very, very seriously and dangerously. So the lesson adoption, let's come to the basic point, that the lesson adoption is the main thing to me that will make you move, and that's a linked. That is a link that's giving a trainer opportunity, a chance, that start talking about new things, start talking about new things, start talking about new things. And the new things is not that if the learner can't say, and this is the biggest issue, I'm telling you. This is the biggest issue. What is the biggest issue? Because as a trainer, as a ADI, my mind is already set up MSPSL, 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 MSM, 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 MSM. Blind spot, blind spot, blind spot. So my mind and my is ready to say these things. Now, until the other logic is built it up in my mind, that when somebody wants to move, once they want to start driving, I will only sit quiet if they say, okay, now clutch down into first gear, then MSM, M mirrors, then look in MSM. If they're saying this, I'm okay. But if they just start doing this, you didn't do your MSM, because they didn't hear that. When they're going left and right at junction, they didn't hear that saying, oh, I need to check mirrors. And that, so basically driving is a skill. Now, if somebody you want to teach junction, and somebody you made them pull up on left hand side, and you telling them, now get into neutral, put handbrake, cancel your signal, come off the brake, relax. What you telling them? What you teaching them? What responsibility you giving them? What is your adoption? What is your live critical example? What is your teaching strategy? Guys, everything has a discipline. Everything has a guideline. Everything has a right way to go through to achieve. And if you really wanted to pass, get the proper training, go into the sessions, and there are many people that teaching rightly. So far, when I started all this, there are few guys that makes sense to me as well. And there's one guy, new one.
I'm not going to name his name because I don't know him. I did give him my number. He started making sense because he's been doing this for 20 years, but maybe more than that. He started making sense and he started talking. I watched one of his video today again regarding these big companies, and he was a bit reluctant to name it, but I name him because I've got the solid proof. If somebody comes and speak to me, I'll tell them this is what you did with them. This is what the people saying. This is what you made them do. They had a proper job. 9 to 5, good job, earning good money. And soon they gave them the bone in their mouth. They left those jobs and they've gone into contract with them. They've lost their families. They've lost their houses. They've gone into the court cases with them. I've got the live example from Bill Plantel, 2 of the customer like this. So I'm telling you, if you want to pass, you can pass without the contract. You can start doing. It's not the taxi job that you have to put 5 years old car in the job and spend 30 grand. No, this job that you can, it depends on you, whichever car you want to put in. Insurance, you can get it cheaper either way throughout the country. We guide you through, we tell you, but the problem is we wanted to go with the brand, isn't it? We wanted to have like name that I am with the Bill Plant, oh I am with the Pass and Go, I am with the AA. You're losing out, and then you'll be, one day they are making you sit in office and drink coffee with them, and 6 months down the line they will see you in court that you owe us this much. So avoid, we can only advise you here, and go with the right track, start learning the right things. And if you want to get help, because they are taking slow amount from you, and that's why they seems cheaper, and we're not taking like that, and we seems expensive. Why? Because we don't have any other contract and taking money for 2 years and 3 years. Suppose something that it will take you 2 years with them and get it, and you pay 500, 200, 1200. This is what normally goes down. 1200 they start with Bill Plant, and later on you pay weekly and monthly for their cost as well for the car. 200, 300 pound these days a week, and they're making money that way. But we only come here and give you guidance to get green badge, guaranteed green badge, if somebody's going to the right track and start teaching rightly according to DVSA's terms and condition and the guidelines. Slowly, because the DVSA seniors, when they give feedback and now it start making sense to us, and then we guide you accordingly, then you will pass. Hope this helps. Thanks.